Huge row in Parliament. Opposition slams Amit Shah. India bloc MPs stage protest. Row after Amit Shah's controversial remark on B.R. Ambedkar. मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है Ambedkar, 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 Ambedkar. Congress hits out at the BJP. It only shows that deep inside they have no respect for Dr. Ambedkar's position. Kharge demand Amit Shah's resignation. उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए. What did Amit Shah say? What is the controversy about? What's happening in the parliament? Massive protests rocked parliament this morning as opposition MPs, armed with photos of B.R. Ambedkar, demanded an apology from the Union Home Minister Amit Shah. Accusations are flying thick and fast, with Congress alleging that the Home Minister Amit Shah has insulted the architect of the Indian Constitution during his fiery address in the Rajya Sabha yesterday. During the debate, marking the 75 years of Constitution, Amit Shah made remarks that sparked outrage. He said, taking B.R. Ambedkar's name had become a fashion now. मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है Ambedkar, 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 Ambedkar. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता. The Home Minister didn't stop there. He questioned opposition's true sentiments for Ambedkar, reminding the House of his resignation from Nehru's cabinet over policy differences. अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7-8 में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता. अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं. सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं. इसलिए वो छोड़ना चाहते थे. उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ. उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया. The Congress hit back hard, with Rahul Gandhi taking a wild swipe, accusing the BJP of following Manusmriti instead of Ambedkar's ideals. Congress President Mallikarjun Kharge labelled Home Minister's comment as yet another insult to Ambedkar. He even demanded Amit Shah's resignation from the cabinet position. और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं. बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा. अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता. Congress leader Supriya Shrinate didn't mince words, saying only someone who detests Constitution can insult Baba Saheb Ambedkar. But wait, this political storm didn't end here. The BJP struck back, accusing the Congress of peddling clip videos and playing cheap tricks. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said Amit Shah was exposing Congress's hypocrisy and called the Grand Old Party a fake news factory. कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी दलों ने कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं मैं उसको खंडन करना चाहता हूं. Even AAP leader Arvind Kejriwal joined the chorus, saying, for every child in this country, Baba Saheb Ambedkar is no less than a god. He accused the BJP of arrogance and disrespect. However, Home Minister has not responded to any of these accusations so far. Will he respond to opposition's demand? Or is this just another day in India's heated political arena?